डीपी 360 डिग्री में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार इस नए सेशन का एक फ्रेश टॉपिक हम लेकर आए हैं, क्लास 11th का डायमेंशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें हम डिस्कस करेंगे आज डेफिनेशंस एंड कंसेप्ट ऑफ डायमेंशन इन डिटेल। अलॉन्ग विद दैट विल नो अबाउट डायमेंशनल फार्मूला। हम डायमेंशनल फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का। Along with that, we will understand about dimensional equations, and last but not least, in the last part of the session, we will take some questions, previous questions which appeared in the previous years in the competitive exams. Some very important questions हम यहाँ पर solve करेंगे आपके साथ मिलकर, तो आपको बने रहना पड़ेगा एंड तक इस बार इस सेशन में। सबसे पहले डायमेंशन क्या होता है? Dimensions of a physical quantity are nothing but the powers to which the fundamental quantities are raised to arrive at a desired quantity. To make simple, let me first start with fundamental quantities. Fundamental quantities are independent quantities. First thing first, you should know, are independent quantities, and they are the first three which are very important in physics mechanics are your mass, length and time. Along with that, four more fundamental properties are there. Let me write it on the board straightway. Yes, mass, as I have told you, is fundamental properties. So these are, as I said, fundamental quantities, or we say they are the basic quantity. They have two names. You can call them fundamental quantity. So there are 7 fundamental quantities of the world. One of them is mass, second one is length, third time, and there are 4 more, temperature, we have current, luminous intensity, we have 3, 3, 6, and one more is there, that is amount of substance. Now mass, we know, is represented by m, and the dimension of mass are represented by dimensional formula of mass is represented by m. The dimensions of length is L, dimension of time is your T, temperature is expressed, the dimensional formula of temperature is K, Kelvin, capital K, current is ampere, A, capital A, luminous intensity, the dimensional formula for luminous intensity CD, small cd, take a note, small cd, candela, and amount of substance is expressed in mole, small m, small o and L. It comes from the mole concept. The 1 mole is nothing but the fixed quantity of a substance is called as mole. It can be 1 mole of an atom, 1 mole of a molecule, 1 mole of an ion, 1 mole of a substance is called as 1 mole. These are the 7 fundamental property. But in mechanics, these 3 are sufficient to arrive at to find the dimensional formula for most of the derived quantities. The dimensional formulas for most of the derived quantities हम निकाल सकते हैं मास, लेंथ एंड टाइम के साथ। जैसा मैंने बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज, और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज. These are dependent quantities and they are formed
by the combination of fundamental, one or more fundamental quantities. How? Some of the derived quantities are, let's straightway start with say velocity. Now we know the formula of velocity is distance traveled in time. So, or a displacement, we can tell displacement a vector quantity, displacement upon time per unit time. So how we will be, what will be the dimensional formula of velocity then? It will be, we know that displacement is nothing but length, and length we know L, and time, this is the length L, and time will pick from here T. One more thing जो मैं आपको कहना भूल गया कि all these dimensional formulas are expressed in square brackets, L and T. Now we can write this as L T minus 1, because this T is in denominator, T to the power 1, T means T to the 1. When it goes up, it becomes minus 1. If there is minus power in the denominator, it will become plus. Minus into minus is plus. Now LT minus 1, this is the dimensional formula for velocity. Now this is the dimensional formula of velocity. This is a dimensional formula, and when this derived quantity is expressed in this this formula, dimensional formula, along with this whole set is called as dimensional equation. Linear equation where separate, we take constant and variables here. Dimensional, similarly here dimensional equation we say. Yes. So here in dimensional equation, the derived quantities are expressed in terms of dimensional formulas by taking fundamental dimensions of the fundamental quantities. That's why derived quantities are dependent quantities. So they are formed basically by the combination of fundamental quantities. Now velocity, we know now velocity is your we'll make a summary here, whatever derivation we are doing. Velocity, and the dimensional formula of velocity is L T minus 1. Let me tell you one thing here. We have to express in, if I express it as in terms of MLT, because there is no m here, mass involved, I can write m0, because anything to the power 0 is 1, so it doesn't make any difference. But if I want to write in standard form, m0 L1 T minus 1 is the dimensional formula of velocity. This is also right, this is also right. Next we'll take, we are running short of space here, we have to rub it, and then we'll find the dimensional formula for some more derived quantities. One of them right now we will be solving just now is acceleration. Fine. Acceleration. Now acceleration, rate of change of velocity is called as acceleration. Rate of change of velocity is called as acceleration. Acceleration, or simply small a I can denote, is rate of change of velocity with time. Rate of change of velocity with time, delta v by t. Now delta v means ultimately the dimension. So what will be the dimensional formula for acceleration? Now velocity upon time. So velocity will pick from here Lt minus 1, Lt minus 1 divided by t is expressed as capital T here. Now this is nothing but Lt minus 1. This is again 1. As I have told you, the positive denominator, the power of the in the denominator will become minus. So minus 1, it becomes Lt minus 2. So the dimensional formula for acceleration is Lt minus 2.
and in bracket. You do not miss out on the bracket. If you miss out, then marks will be deducted. Acceleration. Now let me come to volume. Volume is very simple. You know how we will calculate the dimensional form for volume. We know volume is length into breadth into height. All of these are length, basically the distance factor, so all of them can be expressed as L into L into L, isn't it? So it becomes very easy, you know, L cube. Or if I want to express in the complete standard dimensional formula for volume, it will become M0 L3 and T0 MLT in terms of MLT, the dimensional formula. So this is the dimensional formula. Both of them are correct. Now volume, acceleration, we have done it. So volume, I will write here, is M0 L cube and T0. This is the formula, dimensional formula for volume. Now one important dimensional formula which you need to remember, इसको याद करना बहुत जरूरी है, that is force. क्योंकि force का एप्लीकेशन और भी बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में आपको मदद करता है फोर्स का. ना फोर्स, यू नो, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट यू शुड नो. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, इजंट इट? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो हम भी एक्सप्रेस कैसे करेंगे? मास को हम कर सकते हैं m और एक्सेलरेशन का हम हेल्प लेंगे यहाँ से सीधा सीधा LT माइनस टू L1 T माइनस टू, यहाँ पर M1 है, और कंबाइन कर देंगे तो वी गेट M1 L1 एंड T माइनस टू, MLT माइनस टू. इसको हम सीधा MLT माइनस टू लिख सकते हैं. Yes. Now this is the dimensional formula for force is MLT minus 2. इसको याद रखना बहुत जरूरी है. Let me see it. Now इसका मैंने जैसे बताया फोर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है बहुत सारे फॉर्मूला में, इसलिए MLT minus 2 एकदम फिंगर टिप्स में होना चाहिए. कैसे? आइए देखते हैं. MLT minus 2 फॉर एग्जाम्पल वर्क. We know work जो है, work is nothing but force into displacement. Force into displacement. Again, displacement is nothing but L, you know, length. So force we know from straight way MLC. If I remember, I can put it here straight way. ML1 T minus 2 into L. Displacement is L and force is, I can straight way check from here. Now अब देखते हैं हम, m अकेला है सब में दोनों में, तो m1 L1 it becomes L2 and T minus 2. ML2 T minus 2 is the dimensional formula for work. So work का भी हमने निकाल लिया, m1 L2 T minus 2, isn't it? Now work का यूनिट होता है जूल. Now एक important tips देता हूँ मैं. First tips, if two quantities, physical quantities have same unit, for physical quantity having same unit should have same, you know, dimensional formula. They have same dimensional formula. For example, work is joule and energy, you know, be it kinetic energy, be it potential energy, be it, you know, mechanical energy, any energy you take, they are expressed in joule, so they have the same unit. joule उनके यूनिट है. तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी क्वांटिटीज के अगर उनके यूनिट सेम है तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है. तो वी डोंट हैव टू नाउ कैलकुलेट, लाइफ बिकम्स अ लिटिल इजी हियर. एनर्जी सीधा वर्क का जो भी है, क्योंकि ये भी जूल है, इसकी भी यूनिट जूल होती है, और वर्क का भी हम सीधा वर्क का जो है फॉर्मूला हम डाल देंगे. M1 L2 T minus 2 is the dimensional formula, the same as that of work for energy, isn't it? ध्यान देना, एक F MLT minus 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. वो स्टेट अगर आपको आता है, याद है, तो इट विल बी अप्लाइड इमीडिएटली. नाउ सो ये हो गया हमारा एनर्जी. एनर्जी का भी सेम है
mL2T minus 2, isn't it? अब हम डिस्कस करेंगे प्रेशर का. Now pressure, force acting per unit area is called as pressure. Now area means, अगर हम इसको थोड़ा और ब्रेकअप करें, force means mass into acceleration. एरिया को हम लेंथ इंटू लेंथ कर सकते हैं. एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसको और तोड़ सकते हैं हम. लेकिन इसका जैसे कि मैंने बता रखा है, स्ट्रेट वे वी कैन यूज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एफ इज नथिंग बट ml, क्योंकि मुझे याद है ml1t minus 2. इंपॉर्टेंट चीज़ें भूलना नहीं चाहिए, और अच्छी बातें और जख्म भी कभी भी भुलाए नहीं जाते. नाउ l इंटू L2. अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. m1 L1 minus 2 is minus 1 because 2 ऊपर जाकर minus 2 हो जाएगा. L minus 1, 1 minus 2 is minus 1 and T minus 2. M L minus 1 T minus 2 is the dimensional formula for pressure. There is another term called as stress. अब देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है. स्ट्रेस एंड प्रेशर मीन्स द सेम थिंग. स्ट्रेस एंड प्रेशर मीन्स द सेम थिंग. तो इसकी भी डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी सेम एज दैट ऑफ द प्रेशर, isn't it? Now we are getting deeper and deeper into the dimensional formulas. Stress, ठीक है. So this how we are able to find. Now energy, pressure, stress. Now यहाँ पर लिख लें हम लोग स्ट्रेस को, प्रेशर को भी लिख लें. प्रेशर का हमारा निकला है m L minus 1 T minus 2 एंड स्ट्रेस जो भी वो भी सेम है प्रेशर का, क्योंकि दे मीन्स द सेम थिंग. स्ट्रेस एंड प्रेशर मीन्स द सेम थिंग. एंड T minus 2. अच्छा, जब दिमाग में आ रहा है कि वी कैन कैलकुलेट डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ can we have some quantities which are dimensionless? Let's try. What is the dimensional formula for angle? Angle is in fact dimensionless. Why? I will explain. We'll discuss now about some of the dimensionless quantities. Dimensionless quantities which don't have any dimensions. One of them is angle. Why angle? The formula is arc upon radius. Now both of them are length, so it do not have any angle, do not have any dimension. Similarly, we can go for strain. Strain is another example of dimensionless physical quantity, because strain is change in dimension upon change in dimension, same quantity. So they cancel out each other and it's always one and dimensionless. Similarly, trigonometric ratios, all the trigonometric ratios, they are dimensionless. For example, sine theta, cos theta and other or trigonometric ratios, all of them are dimensionless. One more is there, that is called as dielectric constant. Dielectric, अभी तक अगर पढ़ा नहीं होगा तो आगे आने वाले चैप्टर्स में है, तो हम अगले आने वाले सेशंस में इसको समझाएंगे डिटेल में. Dielectric constant, isn't it? By epsilon, which is again same quantities, the ratio of the similar kind of quantities, so they cancel out the effect of each other and we get it is again dielectric constant is. So ये सारे एग्जाम्पल है. एक आध और है, थोड़ा इन डेप्थ पढ़ के आप खुद अपडेट होइएगा. डायमेंशनलेस क्वांटिटी. So angle, strain, trigonometric ratio and dielectric constants. Now as I promised at the beginning of the session कि हम प्रीवियस ईयर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो लाजवाब क्वेश्चंस आ चुके हैं बेस्ड अपॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आ चुका है हमारे एग्जाम्स में, हम उसे लेंगे, ट्राई करेंगे. वी विल ट्राई टू पिक अप सम
questions to solve. Now say suppose a question is like that कि a physical quantity is expressed in the form of m to the power a, then l to the power b and t to the power c. a physical quantity जो कि mlt इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है. find the physical quantity, find the physical quantity. अरे कैसा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल है, isn't it? वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, जनरल फॉर्मूला, बट हाँ क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. नाउ हियर द क्वेश्चन इज, कैन द फिजिकल क्वांटिटी बी वेलोसिटी? कैन द फिजिकल क्वांटिटी बी वेलोसिटी वेयर ए इज गिवन एज 1, बी इज गिवन एज 1, सी इज गिवन एज -1? कैन इट बी? कैन इट बी एक्सेलरेशन? Can it be acceleration? Can it be acceleration? A is given as 1, where A is given as 1, B is equal to 1 and C equal to -2. Can it be? Can it be, you know, your volume with given A equal to, you know, 0, B equal to, you know, 3 and C equal to -3? Can it be volume? Can it be surface tension? Can that physical quantity be surface tension, which is given as, you know, A equal to 1, B equal to 0 and C equal to -2? Let's try. एक बार इवैल्यूएट करते हैं एक ऑप्शंस. क्या कौन सा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी सेटिस्फाई करता है इसको. नाउ वेलोसिटी. ना वेलोसिटी सीधा हम यहाँ पर जाएंगे. इसका जो फॉर्मूला है LT-1, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला LT-1 या फिर m0 है L1T-1. बट जैसे ही A इक्वल टू 1 कर रहे हैं हम, यानी कि इस फॉर्मूला में हम डालना चाहेंगे, तो देखते हैं क्या निकल के आ रहा है. A1 मीन्स m1, B1 मीन्स L1, C-1 मीन्स T-1. पर जो करेक्ट फार्मूला है वो m0 LT-1, m है ही नहीं और यहाँ पर m निकल रहा है, तो ये गलत है. एक और ऑप्शन एक्सेलरेशन. ये पुट द वैल्यू ऑफ, तो यहाँ से अगर डालें हम, निकल आ रहा है इसका फार्मूला m1 B1 डालो तो L1 और ये -2. पर हमें पता है एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है उसमें m मास नहीं है और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली निकल रहा है, तो यानी कि ये भी गलत है. वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम का होता है L3, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. m मिसिंग है, t मिसिंग है, नहीं है, और यहाँ पर लेकिन t है, तो यानी कि इसके हिसाब से जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो बनेगा m0 L3 एंड t-3. t तो है ही नहीं, यानी कि वॉल्यूम भी गलत है और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, नन ऑफ दिस है ही नहीं, यानी कि करेक्ट ऑप्शन रहेगा सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन, दिस इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ एलिमिनेशन. बट अगर यहाँ पर होता नन ऑफ दिस, तब हमें प्रॉब्लम हो जाती. देन हमें सरफेस टेंशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है हमें निकालना आना चाहिए. लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं, एक बार वेरीफाई कर ले सरफेस टेंशन है कि नहीं. वैसे होगा, पर कैसे देखते हैं. सरफेस टेंशन का ST लिख लेता हूँ शॉर्टकट में. सरफेस टेंशन को जो इसका जो फॉर्मूला है वो है फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स पर यूनिट लेंथ. ना अब डालो इसको. फोर्स मैंने बता रखा, आपको एकदम याद रहना चाहिए, MLT-2. सीधा डालो अपॉन L, लेंथ की यूनिट L. अगर ये देखा जाए ये कट जा रहा है. वी आर नाउ लेफ्ट विथ M1 L0 T-2. ठीक है, ये हमारा एक्चुअल वाला आ रहा है डायमेंशनल फार्मूला जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं. नाउ इसके अकॉर्डिंगली क्या आ रहा है अब देखते हैं. इसको वैल्यू पुट करो सीधा. इट विल बी MA1 है, B0 है मीन्स L0 हो जाएगा, और C-2 है तो T-2. यस, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है. ये देखो, इट्स मैचिंग. दिस इज द करेक्ट आंसर, सरफेस टेंशन. इस तरह के लगेंगे आपको सिंपल, लेकिन थोड़े ट्रिकी होते हैं. एंड यू हैव टू कीप योर कूल. जो फॉर्मूलाज आपने जाना है, इवन इफ यू डोंट नो द फॉर्मूलाज आल्सो, देन आल्सो यू कैन डिराइव थ्रू द यूनिट.
वो भी मैं बताता हूँ आपको, ये सेकंड टिप्स होगा आज का सेशन का। बट एक और न्यूमेरिकल लेंगे, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल, तगड़ा न्यूमेरिकल है, जो कि बहुत मज़ा आएगा आपको। देखने में तो बिल्कुल नारियल जैसा सख्त लगेगा ऊपर से, बट once I start cracking you will say wow, it's so easy, so convenient, isn't it? So एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, this was a good one. Let's take another numerical. Now let me elaborate the numerical through a diagram. एक सर्कुलर किस्म का एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक लिक्विड में डाला गया, एंड इट ट्राइज टू हैव अ फॉरवर्ड मोशन, वेलोसिटी v, इट्स मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी v के साथ, और इसका जो रेडियस है वो है a. नाउ जब ये आगे जाएगा न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, इट विल हैव अ ड्रैगिंग फोर्स विच विल ट्राई टू पुल इट बैक, इसको ड्रैग फोर्स भी कहते हैं, ड्रैग फोर्स. नाउ गिवन, इस क्वेश्चन में गिवन है F इक्वल टू 6 पाई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ईटा, तो 6 पाई ईटा A इंटू वी, सारे मल्टीप्लाइड है, 6 इंटू पाई इंटू ईटा इंटू A इंटू वी. A इज, ये सारे क्या हैं, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, 6 पाई कांस्टेंट है, A रेडियस, F फोर्स and v velocity, v is velocity. क्वेश्चन अब है कि find the dimensional formula for eta, find the dimensional formula of eta क्या है, निकालो. Now how to solve it, इसे हम रीअरेंज करें, इसको हम रीअरेंज करेंगे, जस्ट अ सेक, इसको हम रीअरेंज करते हैं, तो eta को एक तरफ रखते हैं, तो इट विल बिकम f अपॉन 6 पाई ए वी, सारे नीचे a इंटू वी. नाउ एक चीज़ बता दूं, कांस्टेंट टर्म्स और नंबर्स के कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो नो नीड टू टेक हेडेक फॉर देम, स्ट्रेट वे वी कैन इग्नोर देम. तो लिटरली अगर देखा जाएगा तो अब निकालेंगे हम डायमेंशन ऑफ ईटा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अब हम फोर्स का जो डायमेंशन है वो लिखेंगे स्ट्रेट वे, आई नो m1 l1 t माइनस 2, ऑलरेडी यहाँ पर समराइज फॉर्म में लिखा हुआ है, m1 l1 t माइनस 2, यू हैव टू कीप फोर्स इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है. बाय 6 पाई इग्नोर्ड है, a दैट इज यू नो रेडियस इज l1, एंड वी हैव वेलोसिटी, वेलोसिटी इज l t minus 1 meter per second, meter is length and second is time per second, t minus 1. See, from the unit also I can derive the dimensional formula of a physical quantity. अब देखते हैं इसको सॉल्व करें. L1 ये पावर कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ m1, L1 नीचे है, ऊपर जाके ये -1 हो जाएगा, एंड t का -2 + 1 इज -1, -2 ये ऊपर जाके +1, तो -2 + 1 is -1. This is the dimension of the coefficient of viscosity. मजा आया ना? किस बात की देरी? नाउ अगले सेशन में कुछ ऐसे ही बेहतरीन सवाल जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में भर भर के क्वेश्चन लिखिए जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, और बेस्ड ऑन डायमेंशन विल सॉल्व लाइव टुगेदर, एक साथ बैठकर, इजंट इट? एंड किस बात की देरी, किताब उठाओ, पढ़ने लग जाओ. नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, हार्ड वर्क एंड स्वेट अ लॉट. नॉट रिमेंबर, वी नॉट ऑल ऑफ अस आर born with silver spoon, but yeah, we can change the luck definitely with your dedicated hard work. So keep on doing hard work, but at the same time take care of your health, and I will always pray for your success. Keep on shining, keep on smiling, keep on rocking, as I say always. God bless you, and meet you in a new session. Till then, practice dimension much more. Take 50 to 100 questions, let's say, the competitive exams. Read it thoroughly, and then you will be right there in the top bracket. See ya. DP signing off. Have a wonderful time. Bye-bye.